वेलकम एवरीवन। यहाँ बच्चों की आवाज आएगी सर? यहाँ पे कनेक्टेड है? यस सर। एम आई ऑडिबल? यस सर। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द एनहेंसमेंट टाइप MOSFET. In this lecture, we will discuss the enhancement type MOSFET. If you have any doubts regarding the depletion type MOSFET or the JFET that we have covered in the previous lectures, if you have any doubts, then you can ask me now, and otherwise we can start with the enhancement type MOSFET. And the enhancement type MOSFET is also the part of your CA. Okay, so let us start with the enhancement type MOSFET. Before that, if you have any questions regarding depletion type MOSFET, any mechanism that we have understood about the depletion type MOSFET or the JFET we have done in the earlier lectures, and recently we have covered the MOSFET, depletion type MOSFET. So if you have any doubts regarding the depletion type MOSFET, then you can ask me now. Otherwise, we will start the enhancement type MOSFET. Anyone? Any doubts? कोई डाउट है आप लोगों को? कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे? यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं? यस, कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे? आप लोग बता बोल नहीं रहे हैं कुछ? 3 people आ रहे हैं ओनली। ओके, तो देखिए ये हम डिस्कस कर रहे हैं एनहेंसमेंट टाइप MOSFET। ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप लोगों को मिलेगा, बिकॉज ये लेक्चर है, दिस लेक्चर इज पर्टेनिंग टू द CA3 जो कि आज शाम को होगा आपका, उस लेक्चर में आपका ये आएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो पहले ये बताइए आपको डिप्लीशन टाइप MOSFET में, वर्किंग में, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स में, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में, ओमिक रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, ये 5 चीजें हमने डिस्कस की थी। वी हैव डिस्कस 5 थिंग्स अबाउट द डिप्लीशन टाइप MOSFET, द वर्किंग ऑफ द डिप्लीशन टाइप MOSFET, द आफ्टर द वर्किंग वी हैव डिस्कस्ड द drain characteristics, transfer characteristics, and the 3 kinds of region, ohmic region and the saturation region, and third one is the cut off region. तो किसी को कोई डाउट है? Just say yes or no, then I will go ahead. No sir. No sir. Okay, fine. Now we will start with the enhancement type MOSFET. So this is the topic pertaining to the CA3. So let's start with the enhancement type MOSFET. First thing is the construction. The construction of the enhancement type MOSFET is quite similar to the depletion type MOSFET. And again I am clarifying one thing. There is a clear-cut difference between the modes of depletion MOSFET. The depletion MOSFET has 3 modes. Sorry, 2 modes. One is the depletion mode and another one is the enhancement mode. So you should not get confused with this mode with this kind of MOSFET. This is an entirely different kind of MOSFET, and the construction and the working is entirely different. Even the characteristics are the different. If we consider about the drain characteristics and the transfer characteristics, then these are different. Okay, so now we shall discuss the construction of enhancement type MOSFET. Basic difference, as you know, the construction of depletion MOSFET, we are quite aware of the construction of the depletion MOSFET. So as we know, the depletion MOSFET contains 2 N regions, 2 highly doped N regions, and in between them there is a N channel implanted. In the depletion MOSFET, there are, if we draw the
basic diagram of depletion MOSFET, then there is a N channel between the two highly doped. This is a P-type substrate, and this is the electrodes, drain, source, and there is a silica insulating layer, and there is a gate. So this was the construction of the depletion type MOSFET. The construction is quite similar, but there is a one major difference between the depletion type MOSFET and enhancement type MOSFET. In enhancement type MOSFET, this channel is not implanted. Initially, this channel is not present. Actually, in the depletion type MOSFET, we implanted this channel. We implant this channel by ion implantation method, and by which method we are implanting, that is not our concern. Actually, we prepare this device with the help of modern fabrication techniques in the semiconductor physics, and those fabrication techniques are not in our syllabus. Only we need to understand the working of device. And in the depletion type MOSFET, we have already implanted a N channel, and now we will see the construction of enhancement type MOSFET. In the enhancement type MOSFET, we have again two N channels, two N type regions, highly doped N type region. Then there are electrodes are there. This electrode is drain, this is source, and there is a insulating layer, and this electrode is gate. And now in this kind of MOSFET, and this is the body or substrate. And in this kind of MOSFET, the channel is not initially present. The channel is not initially present. We form the channel. We form the channel by some mechanism that we will discuss in a minute. But the thing is this, in this kind of channel, in this kind of enhancement type MOSFET, the N channel is not present. N channel is not initially present. And now we shall discuss the working of the enhancement type MOSFET. So this is the basic difference. And one more thing, in terms of equation, if we want to understand, now we have understood the basic difference between the construction of the depletion type MOSFET and the enhancement type MOSFET. So the difference is this: here the N channel is already implanted, and in this kind of MOSFET, N channel is not initially implanted. We form, or you can say we generate the channel with the help of some applied voltage. So this is the basic difference between the the enhancement type MOSFET and the depletion type MOSFET. And this difference creates the difference in the characteristics and the working of the device. Okay. So now we shall see the working of the device. So in order to create the channel, we will provide some voltage at the gate. But before that, I would like to mention some equation. In this kind of device, ID is not equal to 0 when VGS is 0. Now what you need to understand, when VGS is 0 and we have applied some voltage between the drain and source and VGS is grounded, then their ID is not equal to 0. But for this device, when VGS is 0, for this device, if VGS is 0, then ID is equal to 0. Then what you need to understand, if we are not providing any voltage on the gate, then this ID is 0. Why? Because there is no continuity between these two channels. Because there is no continuity. This is a P-type substrate. This is a P-type substrate. What you need to understand, this is a P-type substrate. Here we have so here must be some depletion region. So I hope you are getting there. Here must be some depletion region very near to the. Here must be some depletion region. So there is no continuity between. There is no continuity in between the drain and source. Why? Why this is happening? Why this ID is 0 when VGS is for this device? If VGS is 0, then ID is not equal to 0. ID की एक वैल्यू होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ID SS.
यही हमारा जेफेट में था और यही हमारा मॉसफेट में है था, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में था. दिस इज द डायग्राम ऑफ डिप्लीशन टाइप मॉसफेट. हियर वी आर comparing both the devices and then we will try to understand the working of the enhancement type MOSFET. Okay, so this ID equal to 0, this is P type, then and this is the VGS equal to 0. And now we can understand why this ID will be 0, because there is no continuity in between the two channels. In between drain and source there is no continuity. पहले तो यहाँ पे n चैनल था, यहाँ तो अब यहाँ n चैनल है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कंटिन्यूटी बन जाएगी पूरी, लेकिन यहाँ पे n चैनल नहीं. This is the basic difference between the two devices. And now we will start the working of the enhancement type MOSFET. So in the working, first we will try to understand the formation of channel, how we can form the channel in the enhancement type MOSFET. So basically, again I am repeating the difference. So what is the basic difference between these two devices? In this devices, channel is already present, and when we are not applying any voltage on the gate and we are applying a voltage between VDS, then we are not getting any, then we are getting some current. Why? Because this drain and source is connected by this N channel, and here there is no channel, and there is a depletion region. Why depletion region? Because this is a P type substrate, this is an N type substrate, and we know that when the two different kind of semiconductor material like P and P type and N type meet, and if there is a structural continuity, in the material, then definitely there will be some depletion region, and that depletion region will hinder, or it will create the hindrance in the path of current, so there will be no current unless there is some voltage here. So VGS is 0, then ID is 0. So these are the basics, and now we shall try to understand the formation of N channel, because we have not implanted N channel in this device. In this device, initially we have not implanted the N channel. So now we shall study the formation of channel. Formation of channel. So how you can form the channel? So in order to form the channel, we will create the we will apply some positive voltage on the So now forget about this D and S. Now for a while, forget about this drain and source. We will apply the voltage on drain and source. First, we are applying the voltage on some positive voltage on gate. We are applying some positive voltage on gate. So we are applying some positive voltage on gate. What will happen if we are applying some positive voltage on the gate? Not like this. Okay, VGS, we are applying some VGS, gate source voltage we are applying, and that is a positive voltage. So this is connected like this. So this is a positive voltage. Let me draw it neatly. This is drain, this is source. So what will happen? Again, the same kind of phenomena will take place. What was the phenomena?
when we have applied some positive or negative voltage on the gate in in the depletion type MOSFET, what was the phenomena in the depletion type MOSFET? There is a polarization of the dielectric. The dielectric will polarize. This dielectric will polarize, and the polarization will be like this. This we have already understood, and we know that whenever we apply some field on, let us suppose this is the field, and this is the field, then there will be some kind of polarization inside the dielectrics. We know that these are the bounded charges, and this is the polarization. And why this polarization happens, you need to go through the basics of dielectric material, or I have already discussed this phenomena in the depletion type MOSFET in a detailed manner. I have already discussed why this polarization happens. Because in a dielectric material we do not have any conducting material, any conducting electrons. So there is an electron cloud. So this is the reason there is an electron cloud, and when there is a force, then the electron cloud tries to shift, and that electron cloud tries to shift, and then there is a relatively like this. So this is how the polarization happens, and there are many kinds of polarization inside the dielectric material. But right now we are not discussing the material science, so we will discuss only the basics which are required in order to understand the enhancement type MOSFET. So these are the basics required to understand the enhancement type MOSFET. So basically it will get polarized. We know that this kind of polarization will take place. And what will happen here? And what will happen here? So these positive charges will repel. So right now all you need to understand, this is the mechanism of formation of channels. So please understand this correctly because this is very important. So when we are applying some positive charge, so there is a polarization taking place inside the dielectric material. We know that this is silica. There is a insulated layer, and this is the SiO2, and here you can see the channel, the dielectric channel. So sorry, there is no channel in between the drain and source. What will happen? These positive charges, because here you can see near the P substrate, very near to the junction P substrate in the dielectric material, there is a positive charge, and this positive charge will repel. This positive charge will repel the holes. This positive charge will repel the hole. Hole will start moving away from this region. What will happen? This region, which is a channel region, but यहाँ पे initially कोई channel है नहीं, अभी n channel बना नहीं है, हम n channel form कर रहे हैं. तो कैसे form कर रहे हैं वो समझिए. हमने यहाँ positive voltage apply किया. अब पॉजिटिव वोल्टेज जैसे हमने अप्लाई किया तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन फिनोमेना वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. व्हाट इज द पोलराइजेशन इन द डाइलेक्ट्रिक्स? सो व्हाट विल हैपन? सो देयर इज अ होल, देयर आर होल्स बिकॉज दिस इज अ पी टाइप सबस्ट्रेट. डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ होल्स है यहाँ पे. ये तो पी टाइप सबस्ट्रेट है, पी टाइप मटेरियल है, और यहाँ जिसमें दो एन टाइप हाईली डोप आपने रीजन बनाए हैं. अब होल्स जब यहाँ से मूव करेंगे, and I hope you remember there was a equation that we have discussed in the semiconductor physics. Semiconductor physics में हमने एक लॉ पढ़ा था, mass action law, NP equal to NI square. And this mass action law is equally valid for all kinds of semiconductor. Either it's extrinsic semiconductor or intrinsic semiconductor, this mass action law is always valid. So this is the mass action law, NP equal to NI square. And what we need to understand here, that if in a particular region, the holes are moving away, so what will happen? So the electrons, which are the minority carrier inside this p-type region, will rush away to come here, because once again you can understand, this positive charge will apply the force on the electron. Positive charge will attract the electron, and it will repel the hole. It will equally repel the hole. Holes will be repelled by this positive charge, and electrons will be attracted by this positive charge. So equally we can say both the things. So what will happen?
here the electrons will accumulate. Electrons will accumulate here, and again we can understand this by, first let me explain you with the help of diagram, then I will explain it by with the help of equation. Okay, so first we need to understand we have applied some positive voltage and there is a polarization and there is a positive charge near the p-type substrate. अब यहाँ पे positive charge है, then this positive charge will repel the holes. Holes को repel करेगा and electrons will get attracted. Electrons from the material will rush away to the positive charge. Material में जो electrons हैं वो positive charge की तरफ आएंगे, यानी कि इस region में electrons बढ़ जाएंगे. Electron जो है इस region में बढ़ जाएंगे. होल्स जो है यहां से मूव करना शुरू कर देंगे. होल्स जो है यहां से मूव करना शुरू कर देंगे. इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, होल्स मूव करना शुरू कर देंगे. अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं? वी नो दिस मास एक्शन लॉ. इफ नंबर ऑफ होल्स आर डिक्रीजिंग, then definitely number of electrons will increase in order to take care of this constant value. This is a constant. Ni square is a constant value. This all equation is related to the semiconductor physics. I hope we have already discussed this in the DW 301. 301 में मैंने ये डिस्कस किया था आप लोगों से कि NP equal to Ni square. So this is the mass action law. The concentration of the electrons and holes is the product of the concentration of electrons and holes is the square is equal to the square of the intrinsic concentration. So Ni square. So this is the mass action law, and you can understand this. So if this will decrease, so then N will increase. So if N will increase, what will happen? So there will be a N channel created. So this is how we can create the N channel, by providing some positive voltage at the gate. If we are providing some positive voltage at the gate, then definitely we are creating the N channel. So how can we create the N channel? Again, let me explain. So this is the way. When this get we apply positive charge, the polarization, this charge will repel the holes and attract the electrons, and if it will attract the electrons, then electron will come here, and from all the material the electrons are in minority carrier and holes are in majority carrier. What will happen? The electrons will come here. So if we keep on increasing VGS, then this number of electrons will keep on increasing. Definitely you can understand. Let us suppose now I have applied some 1 volt, 2 volt, 3 volt, and if I keep on increasing this voltage, then what will happen? This number of electrons will keep on increasing because the charge is there. If the more charge, then the more charge will repel more holes and attract more electrons. Then at a particular voltage Vt, which is called the threshold voltage, the channel will completely form. At a particular voltage Vt, the channel will completely form. So let me write it down. At a particular voltage Vt, the channel will completely form. So at a particular voltage Vt, the channel will completely form. So that voltage is called the threshold voltage. So what we need to understand here, that this VGS will always greater than or equal to VT. इसके बाद डिवाइस आपकी काम करना शुरू करेगी. तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि पहले हमें यहाँ पे चैनल फॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक हम चैनल फॉर्म नहीं करेंगे देयर विल बी नो ड्रेन करंट, बिकॉज देयर इज नो कंटिन्यूटी बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स. There is no continuity between drain and source, and there will be no drain current available. So first we need to create the channel. How can we create this N-type channel? So this is the mechanism that I have discussed to creating the channel, and after creating the channel, we know that there is a threshold voltage at which the channel is completely created, and that voltage is called the VT. And
the applied voltage must be greater than this VGS. The applied voltage must be greater than this VGS. So this is the formation of channel. And now we shall discuss the working. Now we shall discuss the working of the or the drain characteristics. Working or the drain characteristics of the N channel, the N channel enhancement type MOSFET. And then I will discuss some other things. Actually, there is one more thing related to the this region. Actually, what we need to understand here that in this region, initially there is a this is called the inverting layer. Inverting layer. Why this is called the inverting layer? Let me explain you. One more term is there, inverting layer. So first, let me conclude what we have done up till now. So we tried to understand the constructional difference between the depletion type MOSFET and enhancement type MOSFET. और हमने देखा कि the channel was not present and we created the channel with the help of positive voltage. और जैसे जैसे हम positive voltage बढ़ाते जाएंगे एक पर्टिकुलर पॉजिटिव वोल्टेज पे चैनल पूरा क्रिएट हो जाएगा. तो अभी तक बस हमने ये समझा, यही मुद्दे की बात है. ठीक है. और कैसे हमने चैनल क्रिएट किया वो मैकेनिज्म को समझा है कि चैनल को क्रिएट करने की मैकेनिज्म क्या है. पोलराइजेशन एंड देन the holes will be repelled and electrons will be attracted, and then there is a mass action law. How can we, if we are decreasing the value of if we are decreasing the number of holes, then definitely we are increasing the number of electrons, because there is a mass action law applicable to all the semiconductors, whether it's a extrinsic semiconductor or it's a intrinsic semiconductor. So it doesn't matter. So this is the way things are. And now let me draw some more characteristics related to the charge density and this displacement. So if this is the x-axis, this is the x direction, if this is the distance I am taking, so let me explain you why this is called the inversion layer. Initially what happens, this is the p type substrate. ये क्या है? p type substrate है. पूरा p type substrate होगा. यहाँ पे भी p type ही होगा. n channel region था बस यहाँ, लेकिन n channel था नहीं. ये कोई n type material नहीं था यहाँ पे. Let me draw the different diagram. बस इतना ही बना रहे हैं हम. यहाँ पे पॉजिटिव हमने अप्लाई किया, पोलराइजेशन हुआ, सारी चीजें एक बार में आपको रिवाइज हो गई. तो GDS. अब यहाँ पे पहले एन रीजन नहीं था इस जगह पे. अब हमने क्या किया, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाए तब हमने एन रीजन क्रिएट किया. और देखिए जैसे ही आप वोल्टेज हटा लेंगे, ये रिवर्सिबल फिनोमेना है. इफ वी टेक ऑफ द वोल्टेज, अगर यहाँ पे कोई स्विच है और स्विच को मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से अगेन, देन अगेन यहाँ पे फिर से कोई चैनल नहीं होगा, कोई भी चैनल नहीं, बिकॉज चैनल इज ड्यू टू द polarization, due to the here the polarization, and due to polarization there is a attraction or repulsion forces, and that's why the channel is creating. Or if we remove the cause of channel is the voltage. अगर हम इसको हटा लेंगे तो चैनल भी चला जाएगा. तो यहाँ पे कोई चैनल नहीं था क्योंकि अभी हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया. पर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पी टाइप रीजन था. अब पी टाइप रीजन में क्या हुआ कि होल्स कम होना शुरू हुए. इस रीजन में होल्स भागना शुरू हुए यहाँ से. जैसे जैसे चार्ज आया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डिप्लीशन रीजन शुरू हो जाएगा. यानी कि ये रीजन पहले क्या बनेगा, डिप्लीशन रीजन बनना शुरू हो जाएगा. क्यों कि यहाँ वी आर डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ होल्स, वी आर डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ होल्स. सो दिस रीजन विल बिकम द डिप्लीशन रीजन. एक पर्टिकुलर टाइम तक तो ये हमने वोल्टेज बढ़ाते गए, ये डिप्लीशन रीजन बनेगा. और उसके बाद जब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने शुरू हो गए और होल्स कम होने शुरू हो गए, यानी यहाँ पे इन्वर्जन हो गया. फिनोमेना कौन सी हो गई, इन्वर्जन. ये एक पी टाइप मटेरियल था, पहले तो ये डिप्लीट हुआ,
यानी कि इसकी कंडक्टिविटी कम हुई, और उसके बाद फिर जब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने शुरू हो गए तो ये एन टाइप मटेरियल बन गया। यानी ये पी टाइप मटेरियल से एन टाइप मटेरियल बन गया, जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे। जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाई तो इसको फिनोमिना को समझने के लिए हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर इनिशियल कंसंट्रेशन थी, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए कुछ होगी 10⁻12 13, ये किसकी थी? आपकी चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। अब वो पहले क्या हुई? डिक्रीज हुई, डिक्रीज होते 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 फिर वो आगे चल के बढ़ने लगी। तो ये इस तरीके से बिहेवियर होता है। तो इसको तो बोलते हैं यहाँ पे डिप्लीशन बन जाती है, और डिप्लीशन के बाद फिर आपका इन्वर्जन शुरू होता है, तो ये आपकी इन्वर्जन लेयर कहलाती है। That's why we call it inversion layer also. तो ये डिप्लीशन रीजन, और पहले तो आपका क्या हो रहा है? चार्ज कैरियर्स कम हो रहे हैं, यानी कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे इस रीजन में वो कम हो रहे हैं। फिर इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रीजन थे वो बढ़ रहे हैं, यानी कि अब ये दूसरी टाइप का मटेरियल बन रहा है। देयर इज ए इन्वर्जन फिनोमेना इनसाइड दिस लेयर, so this n channel is also called the inversion layer. तो ये इन्वर्जन लेयर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। Now we shall discuss the drain characteristics. Drain characteristics for the CMOS. Sorry, for the not for the CMOS, for the N-channel enhancement MOSFET. N-channel enhancement MOSFET. इसको NMOS भी बोलते हैं. It is also called the NMOS. Popularly, it also called the NMOS. N-channel enhancement MOSFET, also called the NMOS. आपने सुना होगा NMOS। और जब इसका मैं उल्टा कर दूं, यहाँ पे N टाइप मटेरियल ले लूं, यहाँ पे दो P टाइप मटेरियल ले लूं, तो वो कहलाता है PMOS। और दोनों को अगर हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो जो आपने बहुत सुना है टर्म, एक टर्म आपने बहुत सुना होगा CMOS। तो CMOS देखिए, ये हमने वर्किंग डिस्कस करी। अभी देखिए मैं आपको, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो आपको इजी करने के लिए मैं बता देता हूँ। हमने बस सबसे पहले डिफरेंस डिस्कस किया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिप्लीशन टाइप मॉसफेट एंड एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस देखा, इक्वेशन की हेल्प से डिफरेंस देखा। अब हमने डिस्कस किया कि जब हमने ये डिफरेंस देख लिया कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इसमें एन चैनल प्रेजेंट होता है डिप्लीशन में, और इसमें एन चैनल प्रेजेंट नहीं होता। वी क्रिएट द एन चैनल, तो फॉर्मेशन ऑफ एन चैनल देखा। तो फॉर्मेशन ऑफ चैनल हमने किया। यहाँ पे मैं एन चैनल इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम एन चैनल क्रिएट कर रहे हैं। पी मॉस होगा तो पी चैनल क्रिएट करेंगे, बस ये फर्क है। और आपको पता है हम एन टाइप एनपीएन ट्रांजिस्टर, एन टाइप जेफेट और एन टाइप एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट ही यूज करते हैं, बिकॉज द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज हायर देन द मोबिलिटी ऑफ द होल्स। तो इसलिए जनरल फॉर द जनरल पर्पजेज, हम जनरल पर्पज में तो दोनों सेम है, but most of the time we use n type MOSFET because the mobility of the electrons is higher than the mobility of holes. This we already know. तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि ये p टाइप MOSFET आपका, और ये आपका ये जो है सॉरी ये n टाइप एनहेंसमेंट MOSFET की वर्किंग। और फिर हमने देखा कि इसकी जो लेयर है इसमें इन्वर्जन की फिनोमिना हो रही है। ये जो लेयर थी पहले ये p टाइप थी, बिकॉज यहाँ पे पहले कुछ था ही नहीं, और वोल्टेज अगर हम हटा देंगे तो अगेन ये p टाइप ही बन जाएगी। अगेन ये देयर विल बी अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और ये p टाइप लेयर ही बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही हो जाएगा तो अगेन ये p टाइप मटेरियल बन जाएगा, और वोल्टेज को हटाने के बाद। तो ये हम समझ सकते हैं कि दिस फिनोमेना इज रिवर्सिबल। अब ये हमने समझ लिया, और ये समझ लिया कि VGS मस्ट बी ग्रेटर देन VT, तब जाके आपकी डिवाइस चालू होगी। ये डिवाइस को ऑन, इसके नीचे डिवाइस ऑफ होगी। अब हमने एक और चीज समझी, इन्वर्जन फिनोमेना। इन्वर्जन लेयर कैसे है कि ये P टाइप लेयर N टाइप में चेंज हो रही है। P टाइप में पहले क्या होगा, होल्स कम होंगे तो वो क्या बनेगी, डिप्लीशन रीजन। यानी उसमें पहले डिप्लीशन रीजन आएगा, और जब डिप्लीशन रीजन आ गया यानी कि वहां पे क्या कहते हैं, चार्ज कैरियर कम हो गए। फिर जो दूसरी तरीके के चार्ज कैरियर थे यहाँ, जो कि माइनॉरिटी वाले थे उस रीजन में, वो बढ़ने शुरू हो गए, तो वो एन टाइप बनने लगी। तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड द इन्वर्जन लेयर।
ठीक है, तो ये हमने अब तक डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे आपकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉसफेट। और एक और चीज, इस एन चैनल को हम बोलते हैं एनमॉस, और इसको बोलते हैं दूसरे वाले को पीमॉस, और आपने एक सुना होगा सीमॉस, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये इसमें एनमॉस और पीमॉस दोनों होते हैं, और ये बहुत बेटर डिवाइस है। सबसे कम पावर कंजप्शन इसी में होता है, सबसे कम पावर कंजप्शन जो है इसी के अंदर होता है। तो ये सबसे बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है हमारे सामने आज की डेट में ट्रांजिस्टर्स में, अगर हम यूज करते हैं तो दिस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है, तो ये बस इतना डिस्कस करना है, और बाकी अब हम जल्दी से करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर तीनों रीजन, बस देन वी विल फिनिश द लेक्चर। चलिए, अब इतना तो हमें समझ में आ ही गया कि जब VGS की वैल्यू VT से ज्यादा है तभी आपकी डिवाइस ऑन है। तो अब हम डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं कि कैसे हम डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं और डिवाइस को यूज कर सकते हैं। ड्रेन और सोर्स के बीच में एक वोल्टेज कनेक्टेड है, ये ग्राउंड है, और इन दोनों के बीच में भी एक वोल्टेज कनेक्टेड है, VGS। ठीक है, और ये यहां से बॉडी शॉर्टेड है, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से वर्क करेगी। क्वाइट सिमिलर टू द ओल्ड कैरेक्टरिस्टिक, इसमें भी तीनों रीजन होंगे, ID मिली एम्पियर में, और VDS। हाँ, एक और चीज, प्रैक्टिकल वैल्यू जो VT की होती है, प्रैक्टिकल वैल्यू VT की जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो करीब करीब 2 वोल्ट होती है। यानी इतने वोल्ट अगर हम अप्लाई करते हैं पॉजिटिव तो आपका चैनल फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द VDS। और अब यहाँ पे अगेन सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी देयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो VGS की वैल्यू है, ये जो इसको डिवाइस को ऑन होने के लिए एटलीस्ट 2 वोल्ट होनी चाहिए, तो आगे बढ़ता जाएगा ये 3 वोल्ट। यहाँ पे IDSS का कोई कंसेप्ट नहीं है, IDSS का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज IDSS डिफाइन होती है VGS इक्वल टू 0 पे, और VGS इक्वल टू 0 यहाँ पे वैलिड ही नहीं है। कम से कम यहाँ पे VGS की वैल्यू कम से कम आपकी V थ्रेशोल्ड से ऊपर होनी चाहिए। अगर उसके नीचे है तो ये आपका कट ऑफ हो जाएगी, डिवाइस ऑफ हो जाएगी, और इस रीजन को हम बोलेंगे कट ऑफ रीजन, और डिवाइस ऑफ हो जाएगी। चलिए, कट ऑफ रीजन तो मैंने यहीं पढ़ा दिया, कट ऑफ रीजन में यही बताना है बस। कट ऑफ रीजन में इतना ही बात करनी होती है, जब VGS इज लेस देन VT तो डिवाइस ऑन ही नहीं होगी, बिकॉज चैनल ही फॉर्म नहीं होगा। इफ देयर इज नो चैनल देन देयर इज नो कंडक्टिविटी बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। If there is a voltage between drain and source, then there will be no conduction because there is no channel. Unless we form the channel, there will be no conductivity. Then the device will be off. Okay.
So this is the basic characteristics, and again we can have the three regions. Again you can understand कि ये region कौन सा है, same kind of characteristics आती हैं. So this region is the ohmic region. Ohmic region, and beyond that there is a saturation region. There is a ohmic region and there is a saturation region. तो ohmic region क्या होता है, जहां पे डिवाइस जो है किस तरीके से बिहेव करती है, एज ए लीनियर डिवाइस बिहेव करती है, यानी कि द करंट वेरीज विद द अप्लाइड ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज. ठीक है, जहां पे करंट वेरी करता है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पे, तो आगे डिपेंडेंस उसकी नहीं होती है उस पर, यानी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, बट उसकी रेंज बहुत कम होती है. अभी हम इक्वेशन डिस्कस करेंगे, सेम इक्वेशन है जो हमने डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के लिए डिस्कस की थी. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है. एंड अगेन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, फॉर दिस रीजन VDS is greater than or equal to VGS minus VT. This is for the saturation region. This we have already discussed in the previous lecture when we were discussing the depletion MOSFET. तो depletion MOSFET की तरह ही इसमें सारी चीजें हैं, वर्किंग अलग थी जो कि हमने डिस्कस कर ली. The working we have already discussed right now. Working is quite similar to the depletion MOSFET. Working is quite similar to the depletion MOSFET, and the drain characteristics is quite similar to the depletion MOSFET, and the working is different from the depletion MOSFET. In the depletion MOSFET, initially the N channel was present, and in this kind of enhancement type MOSFET, the N channel is not present initially. Okay, so let me discuss the three regions quickly, and I will write the equations and three regions very quickly so that we will finish this topic completely. I have already discussed with you what is the cutoff region. In the cutoff region, when we have applied the voltage, applied voltage VGS is less than VT, is less than V threshold, then the cutoff region is that when the VGS is for the cutoff region VGS is less than VT. So I will discuss it in the cutoff region. So what you need to understand, cutoff कब होगा, जब VGS जो है VT से कम होगा. हाँ, VGS जो है VT से कम होगा तब आपका cutoff region होगा. ठीक है, तो now I will discuss with you the ohmic region and the saturation region. First is the ohmic region. First, in the ohmic region, VGS is greater than VT. But we need to understand VGS is greater than VT. In this region, ID is controlled by VDS. In this region, ID is controlled by VD. ID is a function of VDS. ID is controlled, but the value of VDS is very less. Again, we will see the equation that we have already seen. This is the Shockley equation. This is the Shockley equation pertaining to the enhancement type MOSFET. So here I will discuss this constant K, but prior to that we will understand the ohmic region. For the ohmic region, we know the VDS value is less. VDS value is very less. If this is in 0.1, 0.2, 0.02, then definitely we can neglect this term. Again, we will see, just like the depletion type MOSFET, we will see we can neglect this VD square. We can neglect this term, and we can see ID is proportional to the VDS. So this is a constant value because VGS is constant for a particular VDS. For a particular VDS, VGS is constant. So first thing is this: VGS must be greater than VT in order to device on. Device कब on होगी, और device ohmic region में जब होगी तो जो drain current है, that will be the function of the VDS, and this ID equal to K times VGS minus VT, and this is the ohmic region. Here you can understand this is the basic Ohm's law, proportionality of current and voltage.
So that's why this is called the ohmic region. Now I can discuss the constant K. What is K? K is mu n Cm W by L. So this is the constant K here, and let us discuss the terms inside this K. What is L here? What is mu n? Mu n is the mobility of electrons. Mu n is the mobility of electrons. Mobility of electrons, and which is equal to 600, around 600 centimeter square volt second. This is the mobility of electrons, 600 centimeter square volt second, and the L is the channel length. L is the channel length, and W is the width of the channel. ये माइक्रोन, ये width होती है, ये क्या होती है? फ्रैक्शन ऑफ माइक्रोन. फ्रैक्शन ऑफ माइक्रोन्स में होती है विड्थ. सिमिलरली विड्थ भी आपकी फ्रैक्शन ऑफ माइक्रोन में होती है. और ये जो कांस्टेंट होता है ये आपका Cm, दिस इज Cm इज द एप्सिलॉन S over epsilon naught over TOx. So this is the constant. What is epsilon S? Is the permittivity of silica. जो सिलिका हम यूज करते हैं एज ए इंसुलेटिंग लेयर, जो इंसुलेटिंग लेयर हम, ये कांस्टेंट वैल्यू है बस, तो इसको बारे में सिर्फ जानना है आपको. देयर इज नो कंसेप्ट अबाउट इट, दिस इज जस्ट द कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है? म्यू एन Cm K. So basically this we need to understand the proportionality in the ohmic region. In the ohmic region, what is the proportionality? This we need to understand. So all we need to understand the proportionality here, and this K is the constant. This is a device constant. It depends upon the dimension of the device. So here we can understand this is the mobility of the electrons, which is almost equal to 600 centimeter square volt second. थोड़ी कम होती है as compared to the normal substrates. तो बाकी L is the channel length, and W is the width of the channel. L is the channel length. ये फ्रैक्शन ऑफ माइक्रोन्स में होती है, एंड अगेन दिस इज इन माइक्रोन्स. तो ये दोनों माइक्रोन्स होती है. माइक्रोन्स वी नो दैट 10⁻⁻⁶. 10⁻⁻⁶ होता है माइक्रोन. तो ये आपकी कुछ लेंथ और विड्थ आपकी, ये फ्रैक्शन ऑफ माइक्रोन होती है. ये आपकी 10 माइक्रोन के ऑर्डर की होती है, और ये फ्रैक्शन ऑफ द माइक्रोन, यानी कि 0.1 माइक्रोन, 0.2 माइक्रोन, इस तरीके से होती है लेंथ, और विड्थ होती है ये. बाकी जो आपका Cm होता है, इट इज द एप्सिलॉन S. एप्सिलॉन S इज द परमिटिविटी ऑफ इंसुलेटर, यानी सिलिका की जो परमिटिविटी है. एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये आपको पता है 8.85 into 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, जो भी इसका है वैल्यू कांस्टेंट है. एंड TOx इज द विड्थ ऑफ द सिलिका लेयर. सिलिका लेयर की विड्थ क्या होती है? ये आपका TOx होता है. एंड अगेन इट विल बी ऑफ ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ माइक्रोन. ये जो होगी ये भी माइक्रोन्स में होगी, ठीक है. ये जो विड्थ होती है ये भी माइक्रोन्स में होती है. नाउ वी शैल डिस्कस द सेकंड एंड द लास्ट रीजन, सैचुरेशन रीजन. व्हाट इज द सैचुरेशन रीजन हियर? So this is the saturation region. Cutoff region I have already discussed. So what is the saturation region? We will discuss it here. Here again we will discuss. So for the saturation region, this VDS must be greater than or equal to VGS minus VT, and if we put in this the equation, then we will get ID equal to K times VGS minus VT whole square. If we substitute value in the Shockley equation, then we will get this.
So this you can do, and we know that this VT is must be of 2 volt, at least 2 volt, and this VGS must be greater than VT. So these are the conditions, and in this region again what we can see, the transfer characteristics. In this region you can see the current is independent of, almost current is saturated. In this region current is saturated, the current is independent of the drain source voltage. The current is independent of the drain source voltage, but here you can see there is a slight slope. Instead of a straight line, I have drawn it like this. There is a slight slope. So there is a very weak dependence on this VDS. So we will not consider this, and it is not the part of our curriculum. Definitely you can see here there is a slight slope here. This line is not like this, like this. Otherwise there will be no dependence, but there is a some dependence, and which is very weak, which is very weak. So we will neglect that dependence. We will only consider the dependence. By this equation you can see ID is dependent on the VGS. The only thing which is variable is VGS. अगर VGS बढ़ेगा तो ID भी बढ़ जाएगी. यहाँ पे VT constant है, हमें पता है K constant है. तो here we can see in this region ID is a function of VGS. अब VD का फंक्शन नहीं रहा, ओमिक रीजन में इसी का फंक्शन होता है. अब यहाँ पे क्या है, VDS must be greater than and VG minus VT. Now we can draw the transfer characteristics. Here I am drawing the transfer characteristics for the saturation region. So this is VGS, this is the VT value. Here you can see this by mathematics you can see this is a kind of parabola. So you will get the characteristics like this. So this is the VT, and for a particular VDS. So this is how the current will increase. This is how the current will increase with the increment in the VGS. VGS बढ़ेगा तो ID भी बढ़ेगी. और ये this is for the this is for the constant, for a constant VDS. किसी एक particular VDS पे ये characteristics है, ठीक है. और अगर बदलेगा तो characteristics भी बदल जाएगी. So this is the transfer characteristics for the enhancement type MOSFET. So this is the transfer characteristics pertaining to the enhancement type MOSFET, and we can calculate the transconductance. And if we want to, if we draw a tangent through this, then we can calculate the transconductance. Transconductance क्या होगी? Change in ID over change in VS. So this is how we can calculate the transconductance GM. Change in ID over change in VGS. So this is we can calculate with the transfer characteristics. So these are the parameters that can be calculated. And the last point of this lecture is the cutoff region. So cutoff region is the region where VGS is less than VT. So this is the cutoff region where device is off. So this is all about the MOSFET. So we have completed the depletion type MOSFET and enhancement type MOSFET. In today's lecture, let me recapitulate everything. First, we have discussed the difference between the depletion type MOSFET and enhancement type MOSFET. What is the basic difference? And then we discussed the working and the formation of N channel, formation of channel inside the enhancement type MOSFET, and then we concluded some points that the applied voltage VGS must be greater than VT, and there are some definitions related to the depletion layer and the inversion layer. And then after that we discussed the drain characteristics of the enhancement type MOSFET, and we try to understand all the three regions: ohmic region, saturation region, and cutoff region. So I am concluding this lecture here. So this topic will be the part of your CA. Okay.